problem with networks? I'm sure there must be many. Alright. Before I start my session, तुषार ने सबको एक विशियस सर्कल में भेजा था. वो 5 मिनट 5 सेकंड आंखें बंद करके वापस आ जाओ, उस दुनिया से बाहर आ जाओ पहले, because it will be very tough for me to tell something unless you are in reality. तो वो जो विशियस बैकग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी में आप चले गए थे, उससे पहले बाहर आ जाओ. It will be easy for me to give the realities to you. I hope you are back. Okay. So what are we trying to do in next 30 minutes? Okay. So in next 30 minutes, we'll be trying to see where network plays a role in cloud and overall in general, and where do we need to kind of spend a little more cautiousness in our minds when we are designing our applications. Does network play a role when you are designing your applications, or is it something that can be ignored totally? I am Gaurav and I am in networks for very long, and my success in networks would be if you guys reach to a situation where network can be totally ignored. मेरा सक्सेस वो है कि अगर नेटवर्क के बारे में आपको सोचना ही ना पड़े. अगर आप नेटवर्क के बारे में नहीं सोच रहे हो, that means the network designer has done a wonderful job, and that is why you as a developer is not even required to think of networks. That's my success. So in this whole session, there are 2 or 3 terms that I want you to be very clear about, because these are generally the confused term. जब आप जाके किसी से भी मिलते हो और इन टर्म्स के बारे में जिक्र भी करते हो, you should be very clear कि आप क्या करना चाहते हो, right? So network monitoring is one term which deals only about monitoring of certain entities in network. आपने firewall लगाया, firewall up है कि नहीं, this is monitoring. You had a router in place, is it sending appropriate amount of packets or not? This is monitoring. You have a 40 Mbps connection at home, you do a speed test, 40 MB speed आ रहा है कि नहीं आ रहा, this is monitoring. और ये जो fancy dashboards आप देखते हो, which shows all this red, yellow, green kind of things, this is network monitoring. For example, your manager comes to you and say, क्या मेरे पास 1 million hits per day आ रहे हैं? If your answer is yes, that means you have done something on the grounds of network monitoring. But network monitoring का funny part है, you deal with the known set of problems. आपको पता है प्रॉब्लम कहां से आने वाली है, तभी आप उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग एलिमेंट लगाते हो, राइट? अगर आपको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम कहां से आने वाला है, तो आप मॉनिटरिंग नहीं कर पाओगे. Which means CPU, memory, packets in, packet out, errors in, errors out, utilization, etc. These are known beasts for you. That's how you are taking care of it, and this is monitoring. अब एक नया टर्म आया मार्केट में जिसने लोगों को और कंफ्यूज किया, नेटवर्क ऑब्जर्वेबिलिटी. क्या है? ऑब्जर्वेबिलिटी इज हैंडलिंग द अननोन्स. आपको नहीं पता क्या आने वाला है, ये ऑब्जर्वेबिलिटी है. मॉनिटरिंग में मुझे पता था क्या प्रॉब्लम है, ऑब्जर्वेबिलिटी में मुझे पता नहीं है क्या प्रॉब्लम है. So the only difference in monitoring and observability is, if monitoring was the tip of the iceberg, observability is something that you don't see. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मैनेजर ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि मेरी एप्लीकेशन मुझे 20% ज्यादा रेवेन्यू कैसे जनरेट करके दे सकती है, दिस इज ऑब्जर्वेबिलिटी. बिकॉज 20% ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन ऑफ द एप्लीकेशन इज व्हाट यू एज अ नेटवर्क आई कैन नॉट टेल, राइट? मतलब 20% ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन कैन एक्चुअली मींस 20% ज्यादा इनपुट ट्रैफिक आना, 20% ज्यादा प्रोसेसिंग होना, या 20% ज्यादा आउटपुट जाना, कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता. So this is in whole an observability. Second example मैं लूंगा. आजकल बहुत स्मार्ट कंपनीज क्या करती हैं, they put a KPI on your performance कि यूजर हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है. Now if I tell you as a network developer or you as an application developer, you commit to 20% quarter on quarter happiness index increase, can you give it to me? I think the answer would be no. आपको पता ही नहीं है happiness index क्या होता है, right? If I am using, let's say, an application and it loads in 1 second, is that the happiness index? या फिर अगर मैं एक Netflix पे वीडियो प्ले करता हूँ और वो वीडियो 1 सेकंड के अंदर चालू हो जाता है, is that the happiness index?
हैप्पीनेस इंडेक्स आपको डिफाइन करना पड़ेगा एज एन अननोन केपीआई. दैट इज वेयर समथिंग व्हिच इज अननोन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑब्जर्वेबिलिटी. तो आपसे जब भी कोई बात करता है मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी के हिसाब से, तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जर्वेबिलिटी है, एंड हेंस ऑब्जर्वेबिलिटी इज अ सुपरसेट ऑफ मॉनिटरिंग. नाउ कमिंग फ्रॉम अ क्लाउड वर्ल्ड, आप ये जरूर जानने की कोशिश करोगे कि वेयर डज दिस ऑब्जर्वेबिलिटी फ्रेमवर्क कम्स एंड फिट्स इनटू द क्लाउड जर्नी. मुझे इसकी चिंता कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए, राइट? I was very happy in Pranay's session. Pranay ने जब IaaS, PaaS और SaaS की बात की, उसने नेटवर्क को ग्रे आउट दिखाया तीनों जगह पे, राइट? Very happy thing for me. अगर आप नेटवर्क को भूल जाओ ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, आप लोग नेटवर्क को तब याद करते हो जब कोई समस्या आ जाती है, राइट? एक एप्लीकेशन डेवलपर when things are working good, उसके मैनेजर ने उसको बहुत अच्छा अवार्ड दिया, things are great, he will never remember networks. बिकॉज एप्लीकेशन ने अच्छा काम किया, नेटवर्क ने थोड़ी ना किया. लेकिन जब एप्लीकेशन नहीं चलेगा ना, सबसे पहले नेटवर्क वालों के पास आओगे कि यार नेटवर्क की वजह से कुछ लेटेंसी आ गया है, राइट? सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इन योर बैक ऑफ द माइंड यू शुड ऑलवेज हैव अ नेटवर्क माइंडसेट, राइट? इवन दो यू आर एन एप्लीकेशन डेवलपर, यू शुड स्टिल रिमेंबर नेटवर्क इवन इन योर कॉन्शियसनेस. एंड दीज आर द 4 stages where you should actually worry about what I am trying to say. First, when you're choosing a cloud provider, you always have a choice, right? GCP may not be your obvious choice to start off with, right? When you have a choice to make, and the choice can be of various cloud providers, or the choice can be stay on-prem versus cloud. When you're making that choice, first, I'm not saying the only criteria, but one of the criteria should be networks, right? For example, if you are selecting a cloud provider, or if you're choosing a hosting provider, and your customers are coming from, let's say, France, and your manager says अगर मेरा पेज लोड टाइम 1 सेकंड से कम है तो आई एम गुड. ये KPI ऑनर करने के लिए आपको नेटवर्क समझ में आना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई यू शुड केयर अबाउट नेटवर्क्स. तो आपको नेटवर्क मॉनिटरिंग, नेटवर्क ऑब्जर्वेबिलिटी को वहां पे यूज करना पड़ेगा. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड स्टेज व्हिच इज प्लानिंग. यू ऑल राइट अ ब्यूटीफुल एप्लीकेशन. प्रणय ने बहुत कुछ बताया ना, कुबरनेटिस यूज किया, जीके यूज किया, कंटेनर यूज किया, बहुत कुछ यूज किया, बट कहाँ होस्ट करोगे उसको? Where to host it? Should I be hosting that in Mumbai? Should I be hosting it in Delhi? Should I be hosting that in Singapore? Or should I just host it anywhere? I don't care. So what I'm trying to say is that when you try and take a decision on planning, migration, capacity, timing, latency, this is where you should remember networks, right? And this is where you should care about network operations and the timing of it. The third thing is when you are in a steady state environment. When you are in a steady state environment, your application is working fine, don't care about networks. But at least when things break down, you should do a first level of intelligence yourself. Was that an application problem or was that a network problem? अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. When I was about to get onto this stage, I was asked यार 30 मिनट में हो जाएगा ये प्रेजेंटेशन. यार गलती तो प्रणय की थी, उसने टाइम ज्यादा ले लिया, तो एप्लीकेशन वालों की गलती और नेटवर्क वालों पे डाल दिया तुमने. What I'm trying to say is कि जब एप्लीकेशन का प्रॉब्लम होता है, instead of going back into applications behavior, instead of going into application processing में भी ज्यादा टाइम लग सकता है, right? So if I'm saying that my page load time took more than expected, it could have been very well the problem that the application server has taken more time to respond rather than a network problem. And this is what you should be actually worrying about. कि मेरा नेटवर्क हमेशा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है. How do I have that visibility? So I think these are the stages. But what are we trying to solve in networks? मोटा-मोटा 5 stages है network का, and this is where you should actually be worrying yourself about it. First is it up or not? मेरा नेटवर्क अप है कि नहीं is the first problem statement that we always try to solve. The second is it working? मेरा राउटर अप है, फायरवॉल अप है, लेकिन उसके अंदर का प्रोसेस क्रैश है. Right? So that means it is up but it is not working. Second problem statement to solve. Third is I have found that it is up but it is not working. But where exactly is the problem? Is it in the kernel space? Is it one of the security policies blocking it? Or is it one of the process that is misbehaving? I need to find a root cause of that. The fourth and the fifth
is what I was actually referring back to, linking to KPIs. Is my business growing because of everything working fine or not? And finally, I want to find a solution of self-driving IT ops. Vicious thinking है, but actually we are slowly moving there. I think Tushar also talked of it. प्रॉब्लम आने से पहले सॉल्व हो जाए, वेरी विशफुल थिंकिंग. ऐसा होता तो हम लोग जॉब नहीं कर रहे होते आजकल, राइट? बट वी आर स्लोली गेटिंग देयर. हाउ कैन नेटवर्क सपोर्ट मी इन दैट जर्नी ऑफ बीइंग देयर? You will be surprised to note, in 5 जर्नी में से 70% of the enterprise are in first 3 stages. This is not me speaking, this is one of the best analysts of the world speaking. 70% लोग पहले 3 stages में ही struggle कर रहे हैं आज की डेट में. Is it up? Is it working? If it is not working, where is the problem? These are the 3 stages where 70% of enterprise are. And with heart on the hand, some of you might be in that 70%. बाकी के 2 तो हमारे लिए एक विजुअल थिंकिंग हो गया, बट वी आर स्टिल ट्राइंग टू एड्रेस द फर्स्ट 3. नाउ लेट्स स्टैक अप एंड लेट मी स्टार्ट गिविंग यू सॉल्यूशंस ऑफ ऑल दिस, राइट? मेरे को मोटा मोटा चाहिए क्या? फ्रॉम अ नेटवर्क आई नीड 4 थिंग्स. आई नीड मॉनिटरिंग, व्हिच मींस इज इट अप और नॉट, इज इट डाउन. सेकंड, आई नीड विजिबिलिटी, अगर कुछ डाउन है तो क्या डाउन है और क्यों डाउन है. थर्ड इज आई वांट अ डायग्नोस्टिक, व्हिच मींस somebody who has worked in networks, how can I achieve my SLAs? This is what I want. अगर मेरे को P1 resolve करना है 1 घंटे के अंदर, how can I resolve that? That is my third problem statement. Second is give me enough insights. When I say am I sitting on a volcano, Tushar had a great example in the previous session. जिसको जितना चाहिए उतना ही दो. But lot of people what they do is, यार अभी काम चलाना है ना, दे दो, ओनर एडमिन दे देते हैं, चलो बाद में देखेंगे. A developer comes and sit on your seat and said, आज रात को मेरा ब्लैक फ्राइडे सेल स्टार्ट हो रहा है, आप अभी के लिए सारे पोर्ट्स खोल दो, 4 दिन बाद ब्लॉक कर देंगे. So in your unconscious mind, you have given an unnecessary access to lot of people, and hence yes, you are sitting on a top of a volcano. It can actually burst. फिर वही होगा, दुख दर्द और संकट, डीडोस वालों के पास आओगे कि यार ये हो गया मेरे साथ, राइट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको मोटा मोटा ये 4 चीजें तो चाहिए. एनफ ऑफ प्रॉब्लम, सॉल्यूशन पे आते हैं. इन GCP's वर्ल्ड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट हैज टू डू विद ऑब्जर्वेबिलिटी falls under a criteria of a solution called Network Intelligence Center. Just remember one word, NIC. जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बैकग्राउंड से आते हैं, निक कार्ड आपको याद होगा, NIC वर्ड याद रखना, ठीक है? So what is NIC? NIC is a Network Intelligence Center platform. Think of it like a Swiss knife army. इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं. So we give you lot of options, but under this one platform of NIC. It's a study on its own, and I can go on and on. But in next 15 odd minutes that I have, I will only talk about 4 things that can make your life really simple. And I'll go on explaining this in coming slides. सबसे पहला problem statement that I'm trying to solve is to give you enough visibility to what is happening in your network, and the solution is called network topology. So think of it like this. A new college grad joined your team and he asked you, sir, आज की डेट में मेरा नेटवर्क चलता कैसे है, right? या मेरा एप्लीकेशन चल कैसे रहा है? And you as a developer of that application owner, आप उसको 100 पेज का LLD पकड़ा देते हो. वो बेचारा जॉब में अभी आया है, कल छोड़ के चला जाएगा. आप उसको 100 पेज का LLD से डरा देते हो. So what I'm trying to say is that the guy asked you a simple statement, आज की डेट में नेटवर्क कैसे चलता है? Instead of giving him a 100-page LLD, you should actually give him or her a live diagram of how network works, right? And the word here is live diagram. I can very well make a visual diagram or things like that, and I can give it to him or her. But the problem with that is not a living diagram. आप अपने enterprise में रोज नई changes करते हो, तो आप जाके उस diagram को change नहीं करोगे. So you need a living diagram. This is what network topology is all about. Network topology, it is a visualization of whatever is running in GCP, and it starts from user trying to access the application all the way to the application workload. तो अमेरिका के यूजर ने मेरा मुंबई के वर्कलोड को एक्सेस किया, पूरा एंड टू एंड पाथ आपको ऑन द फ्लाई दिखता है इसमें. But what is the beauty of this? The beauty of this is it actually tells you lot of intelligent stuff which helps you make decisions, right? So for example, it gives you insights about
40 MB of traffic coming from Americas and hitting you on the Mumbai workload. भैया अमेरिका का ट्रैफिक है तो मुंबई आई क्यों रहा है? पहली प्रॉब्लम तो यही है. अगर अमेरिकास का ट्रैफिक है तो अमेरिकास में ही होस्ट करो अपनी एप्लीकेशन, मुंबई तक लेके क्यों आ रहे हो? Right? So it gives you enough visualization which helps you take decisions on the fly. Second thing that it will actually help you is कि ये आपको historical data भी देता है, which means if somebody comes and sit at your seat कि कल तक ये application सही चल रहा था, आज नहीं चल रहा, so you can go back in a historical thing and say, see if something has changed on your topology or not, which means till yesterday how much MB traffic was coming in via what path and what has changed now, and visualization में you can make a decision of what has changed. So I hope what is it and what it offers is clear, but where can you be using it to make a problem statement easy for you, right? It gives you मोटा 3 से 4 problems to be solved. First is obviously, as I said, it gives you a enough monitoring which can solve your problem, but it also helps you in keeping your cost under control, right? How cost comes into picture. Your manager comes and sit at your seat and said network का खर्चा बहुत हो रहा है. एप्लीकेशन वाले तो भगवान के देवता है, उनका तो खर्चा होता नहीं है, नेटवर्क वालों का जुटता है सबको, राइट? सो द प्रॉब्लम दैट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट खर्चा नेटवर्क का बहुत हो रहा है. यू कैन एक्चुअली प्रूव दैट इट इज नॉट नेटवर्क्स by simply showing them in this topology that what traffic came in, how much traffic came from which region, landed onto which port or which path, and then you can help them optimize it or not, right? So what I'm trying to say is visualization, optimization, architectural problem solving, mean time to resolve, इसका एक ही solution है, network topology. I think I made sense on this. Are you with me? Yeah? Okay, good. The second brahmastra in your hand would be connectivity test. Now what is a connectivity test? Again, somebody came and sat on your seat, कल तक चल रहा था, आज चलना बंद हो गया. तो पहले तो इन चीजों का कोई रियलिटी नहीं होता. कल तक चल रहा था, आप उसी बंदे से पूछो ना कल तक चल रहा था कि मुझे लॉग्स ला के दे, तो उसके पास नहीं होगा, राइट? बट ही विल कम एंड सिट ऑन योर डेस्क कि कल तक चल रहा था यार, आज नहीं चल रहा. ठीक है, नेटवर्क वालों के तो काम ही है प्रॉब्लम सॉल्व करना, करते हैं इसको सॉल्व. So what I'm trying to indicate is there is something called as connectivity test. Connectivity test is nothing but a hop by hop visualization of how traffic moves from point A to point B. Now somebody in this room can actually get up and say, यार ये तो trace route भी करता है, आपने क्या नया बना दिया, right? So what I'm trying to say is connectivity test is a glorified but a more powerful version of what trace route used to do. Trace route आपको ये बताता था कि मेरा trace कहाँ पे बंद हो गया, right? What this actually tells is क्यों बंद हो गया, right? So for example, if your traffic went and got blocked by firewall, this guy will tell you firewall के अंदर there is rule number 10 which is blocking your traffic, right? So this actually is a great visualization of traffic going from point A to point B and it has crossed 20 hops. It will tell you what has happened at each of those 20 hops. So it went to a routing table में उसको route मिला, फिर वो firewall पे गया, firewall में उसको permit मिला, फिर वो आगे गया. So it tells you at each of those hops what has happened. Now if one of this is broken, it actually tells you how to solve it. So that is how it makes life simple for you. But what problem are we trying to solve with connectivity test? Any one of you has worked in operations like a NetOps, DevSecOps will be with me. जब change window होता है ना, we fix one thing but we break 10 other things. So सबसे easy job क्या होता है ना, रात से 12 से 6 का change window पकड़ो और 6:30 फोन ऑफ कर दो, क्योंकि जो 12 से 6 में चेंज करता है ना, वो सुबह 6:30 बजे पता चलता है कुछ और ब्रेक हो गया है, राइट? So how do we solve this problem with connectivity test is हम अपने environment के जो सबसे critical flows होते हैं, a VM talking to VM, a VM talking to a SQL database, a VM talking to an internet user, उसके connectivity test बना के रखते हैं. Before migration window, I run those 100 tests. After migration window, I run those 100 tests. If all of them are matching, that means मेरे change से कुछ break नहीं हुआ. Don't come and catch me after the migration कि तुमने कल रात को change किया था, things have stopped working after that. So what I'm trying to say, connectivity test is one mechanism which will help you prove you innocent also, right? Right? Networks are not, although we are the notorious people on the floor, but हम हमेशा culprit नहीं होते, is what I'm trying to say, right?
तो network connectivity test is that second test that will help you. आप इसको कहाँ use कर सकते हो? मोटा मोटा you can use it at testing for connectivity between VM to VM, VM to service, internet to VM, internet to internet, etc. There's a great blog written by Google Cloud on this. Feel free to see how it works or not. And anyways, I'm there. You can catch hold of me for this also. Third thing is performance dashboard. So we have talked about network topology. We have talked about connectivity tests. Right? The third is performance. My definition of performance revolves only around two parameters, which is packet loss and latency. इसके अलावा there is nothing called as performance in the world of cloud, right? Latency in a simple language is a time taken between point A and point B. Packet loss is if I send 100 packets, how many of those 100 packets safely reach a destination. Very simple way of putting on it. अब latency का law of physics से बहुत direct relationship होता है. After all, it's the speed of light that goes from point A to point B. I've seen people coming to the desk and saying it is taking more than the expected time to go from point A to point B. I asked him, what is your expectation? He said less than 30 millisecond. मैंने बोला यार US से लेके इंडिया ही 30 मिलीसेकंड स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, पैकेट कैसे पहुंचेगा? Right? So you are trying to reach laws of physics or what? Have you ever realized when a package goes from India to US, it takes X millisecond because the speed of light to go from US to India is that much. How can you expect me to be kind of delivering a packet in 30 milliseconds? So what I'm trying to say? I'm trying to say is that we as a network/compute admin or a developer should be very cautious of the fact where are we placing our applications. कई बार ऐसा होता है कि because we are under a immense pressure of cost optimization. Database hosting US में सस्ती है, इंडिया में महंगी है, but VM इंडिया में सस्ता है, US में महंगा है. Right? So हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस यूएस में होस्ट कर देते हैं, वेब सर्वर इंडिया में होस्ट कर देते हैं. अब वेब बाबा जाके डीबी से बात कर रहा है, यार 200 मिलीसेकंड तो लगेगा ना, एंड यू आर कमिंग टू मी एंड सेइंग कि यार वो 30 मिलीसेकंड कर दो. भाई भगवान भी नहीं कर पाएगा. ठीक है. So what I'm trying to say is कि performance dashboard is that dashboard that helps you visualize what is the performance of the network underneath all this. And if I have to simply break it down, this has to relate with how Google performs versus how your project is performing. Now, I'll not shy away from saying is कि network goes down. This is a hard fact. Network down जाते हैं. Google का network भी down जाता है. ऐसा तो कुछ नहीं है. Google 100% आप अपना network operate करता है. But what are we trying to prove with performance dashboard? I'm just trying to prove 2 points. First is I'm trying to prove a point that is it an application problem or is it a network problem? Which means if I give you a graph which shows that the performance of the network was clean, 60 मिलीसेकंड मतलब 60 मिलीसेकंड ही है लास्ट 1 साल से, मेरा ऊपर नीचे नहीं हुआ. If you are reporting me a problem and you are saying something is not performing, I have enough arm and ammunition to prove you that network is not bad performing. Go and check with development. I know some of the developers may get hurt by this, but हर बार नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होता. ये प्रूव करने के लिए डैशबोर्ड एनफ होता है हमारे पास. ठीक है. What is the second problem that I'm trying to solve here? You must have seen lot of problems around is it you versus me. गंदा है लेकिन गंदा है, राइट? हमें अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है. इट इज नॉट माय प्रॉब्लम, इट इज योर प्रॉब्लम. एंड दिस टाइम द अदर पार्ट ऑफ द पार्टी इज दिस ISPs. देखो, एप्लीकेशन डेवलपर ने अच्छा काम किया, गूगल क्लाउड ने अच्छा काम किया, लेकिन द ट्रैफिक टू गो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B ट्रैवर्सेस दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. आपने जियो का कनेक्शन लिया, आपने एयरटेल का कनेक्शन लिया, उसमें भी तो प्रॉब्लम हो सकता है ना, राइट? सो व्हाट इज दैट डैशबोर्ड? दैट इज द वन डैशबोर्ड दैट हेल्प्स यू प्रूव that it is neither an application problem nor a Google Cloud problem, but an intermediate party problem which can be ISP is this dashboard, right? So have a look at this dashboard to prove. And last is it specific to my project or is it Google wide problem statement? So for example, let's say a Google Cloud network between India and Singapore has gone down. तो ऑब्वियस ही बात है कि गूगल क्लाउड का नेटवर्क बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर इज एक्सपीरियंसिंग सम डाउन टाइम, योर प्रोजेक्ट विल ऑटोमेटिकली बी इंपैक्टेड बिकॉज़ ऑफ इट. तो अगर P1 खुला है that an application between India and Singapore is not performing well,
don't even invest time in putting your time and energies in dissecting that problem, क्योंकि इस समय गूगल का ही डाउन टाइम चल रहा है. So this application dashboard is good enough to tell you, is it a Google wide problem or is it your project specific problem. Last of all this is firewall insight. So I talked three things: topology, connectivity test, performance dashboard. The fourth is firewall insight. Any one of you has experience handling firewalls in real life? Okay, quite a few. Firewalls के साथ प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये होता है कि हम firewalls में ना additions करते हैं, कभी subtractions नहीं करते. Which means if today my firewall has 100 rules, एक साल के बाद वो 100 से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग हमेशा प्रेशर में होते हैं. आज रात को एक एप्लीकेशन डेवलपर आया, my application is going live, पोर्ट 22, पोर्ट 80, पोर्ट 443 पे हिट्स आएंगे, इसको ऑन कर दो. 3 दिन बाद हमने जाकर इसको क्वेश्चन किया, डू यू स्टिल नीड इट? एप्लीकेशन डेवलपर विल गिव दैट वियर्ड लुक, क्यों भाई क्या हो गया, अच्छा खासा चल रहा है. बट एज अ नेटवर्क गाय आई एम वरीड कि आपने पोर्ट 80 भी खोल रखा है, 443 भी खोल रखा है, 22 भी खोल रखा है, डू यू रियली नीड इट और नॉट? एंड दैट एप्लीकेशन डेवलपर विल गिव यू वन आंसर. तुम देख लो अपनी तरफ से जो करना है, अगर मेरा एप्लीकेशन इंपैक्ट हुआ तो अच्छा नहीं होगा. दैट इज जनरली व्हाट इट हियर, राइट? क्योंकि एप्लीकेशन तो रेवेन्यू जनरेटर है, बेचारा नेटवर्क तो इनेबलर है, राइट? तो हम नेटवर्क वाले क्या करते हैं, ठीक है यार उस पॉलिसी को लगे रहते हैं, कोई बात नहीं. दूसरा एप्लीकेशन ओनर आया 3 दिन बाद, उसने बोला मेरी एप्लीकेशन लाइव जा रही है, उसके लिए भी रूल लिख दिया, कोई बात नहीं, चलता रहा, दुनिया आगे बढ़ती रही. 1 साल बाद देखा यार 1000 रूल हो गए. फिर नया मैनेजर आया, कहता यार 1000 रूल इनको कम करो, मेरी मेमोरी खत्म हो रही है, मेरा फायरवॉल क्रैश हो सकता है. अब कोई शोले का शहंशाह ही आएगा या अमिताभ बच्चन ही आएगा जो उसको साफ करेगा रूल्स को, मैं तो हाथ नहीं लगाता, बिकॉज क्लियरिंग दैट रूल विल डेफिनेटली ब्रेक समथिंग, राइट? तो फायरवॉल वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि जिसमें हम एडिशंस करना पसंद करते हैं बट सब्ट्रैक्शंस नहीं करते हैं, राइट? एंड उससे होता क्या है, जो फायरवॉल कंपनीज है इनका रेवेन्यू बढ़ता है और कुछ नहीं होता. फायरवॉल में आपने 1000 रूल लिख दिए, उसकी मेमोरी खत्म हो गई, चलो एक ब्रांड न्यू डब्बा लेके आते हैं, एक और फायरवॉल लगाते हैं, और फायरवॉल लगेगी, लोगों को काम मिलेगा, यार आई एम डिप्लॉयिंग अ फायरवॉल, वाह मजा आ रहा है. 2 साल बाद वो फायरवॉल भी कम पड़ गई, तो और फायरवॉल आ गए, तो लोहे के डब्बे इकट्ठे हुए चले जा रहे हैं मेरे डेटा सेंटर के अंदर, ठीक है? अब लेकिन क्लाउड में ये प्रॉब्लम सिंप्लीफाई कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम तो लोहे के डब्बे बेचना है, मैं तो आपको सॉफ्टवेयर बेचता हूँ, राइट? So software firewall insights is that platform that gives you enough insights into what is happening into firewalls. It gives me mota 2 से 3 good insight which help you. And I'll jump the slide. There is something which is called as shadowed rules. Shadowed rules का concept ये है कि आपने एक रूल लिखा जो बहुत रिस्ट्रिक्टिव था. For example, आपने एक रूल लिखा, IP address A will talk to my application only on port 80. नहीं चला एप्लीकेशन, रात को दिक्कत आ गई. जो शिफ्ट में नेटवर्क एडमिन था उसने बोला यार बाद में देखेंगे यार, इस समय क्या करते हैं, ए टॉकिंग टू बी, पोर्ट 80 में सारे पोर्ट्स खोल देता हूँ यार, कौन देख रहा है. सो ही यूज एन एंटर अ कमांड, ऑल पोर्ट्स अलाउड, सारे पोर्ट्स खोल दिए, एप्लीकेशन चल रही. लेकिन उस जिस बंदे ने वो रूल लिखा था ना पोर्ट 80 वाला, वो रूल रह गया शैडोड, और उसके ऊपर आपने एक बड़ा रूल लिख दिया. तो हमेशा क्या होगा, बड़े रूल को हिट मिल रहा होगा, छोटे वाले रूल को कभी एग्जीक्यूट ही नहीं. This is called the concept of overshadowing. इसका प्रॉब्लम ये है कि आपने एक बड़ा रूल लिख दिया जिसकी जरूरत ही नहीं थी, right? And it has opened up a loophole into your security mechanism. What this dashboard will tell you is, and if I can fetch a photograph of it maybe next time, is it will tell you that there are 2 rules in your database, rule number 1 and rule number 17. 17 is getting overpowered by rule number 1, तो आप 1 को या तो ऑप्टिमाइज कर लो या 17 को बेटर कर लो, but one of these you need to delete. It will tell you those kind of correlations, and hence it is enough for you as a security/network admin to make a informed decision कि मुझे क्या करना चाहिए. Secondly, you have blocked the rule, so you have written a rule which says block port 80 on this VM, लेकिन उस एक रूल पे मिलियन हिट्स आता है एक दिन में, which means somebody is trying to brute force you, और आपने एक फायरवॉल रूल लिखा हुआ है जिसकी वजह से आप बचे हुए हो आज तक. तो it is a good enough insight for you that somebody is trying to brute force your application on that port 80 million times in a day.
So you need to have a more better informed decision कि उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। तीसरा, इसका उल्टा करते हैं, यू हैव रिटन एन अलाउ रूल बट उस पर 30 दिन से कोई हिट ही नहीं आया। यार कोई हिट ही नहीं आया तो फिर अलाउ रूल लिखा ही क्यों हुआ, उसको हटा दो, अलाउ क्यों कर रहे हो? So these are some kind of insights that gives you enough informed decision to be taken on the file. With this, I think enough from my side. I'm not a social media guy. Network वालों को भी नहीं लगा पसंद है, but you can meet me on LinkedIn.